लेना। ठीक है, कर लूंगा, कर लूंगा। Alright, so let's go ahead and start discussing this. Last 7 days were painful because of eye pain. Hopefully this therapy will bring a lot of change. ऑनलाइन क्यों कर रहे हो फिर आप? Yeah, well, that's a funny part of it, though it's a therapy, yet it's online. But नहीं, it is very ऑनलाइन का भी तो effective in फायदा it. है, फिर भी तो आपको स्क्रीन पे तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, रहना पड़ेगा, बट स्क्रीन से कम रिलेटेड होता है। हमारी जो आई मसल्स की जो कन्वर्जेंस है, द कैपेबिलिटी टू मूव गेट्स लिमिटेड, एंड so this therapy is not addressing, screen mukti. It is saying now we will improve the quality of your life. And oh wow man, सर nice. आई जो वो नहीं होती, क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट जो होता है के अंदर, जो हाँ भी हाँ कहते हैं इसको, हाँ फिर वैसे घुमाया करो ना ऐसे ऐसे। हाँ, वही वही समथिंग लाइक दैट, सो दैट टेक्स केयर ऑफ योर कन्वर्जेंस। बिकॉज योगा में जाता हूँ तो मैं मेरी आंख थंब मुझे ऐसे रखना होता है, और बिना गर्दन हिलाए हुए हैव टू जस्ट फॉलो द थंब, अप एंड डाउन एंड ऑल दैट। यस, यू राइट। ना एक योगा में एक देयर इज अ षटकर्म, अ क्लीनिंग प्रोसेस। ओके, टेल मी। सर वो एक तरह से आई के लिए बना है पूरा वो। हाँ हाँ। आपको किसी एक अंधेरी सी जगह पे, थोड़ा सा डार्क हम्म। होना चाहिए, ठीक है। एक कैंडल होल्डर होना चाहिए आपके पास, उसके अंदर आपको एक कैंडल जलानी है, कैंडल की हम्म। फ्लेम को आपको 50 से 20 मिनट्स तक घूरना है। ओ मैन, विदाउट ब्लिंकिंग? यस सर। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस? वो बताना मेरे को यार बाद में। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस एक्स? नेम का जो नाम है प्रोसेस, उसका नाम है त्राटक। त्राटक। Tratak, man, you're neck deep in yoga, man. I'm very impressed. क्या? I'm very impressed with your knowledge, man. And you're सर मेरे पास पी deep है ना, inside yoga. मेरे पास अच्छा। पी है, उसमें है ये। Oh, अच्छा, oh, okay. It's part of it, not part of your teacher who comes and does yoga. अच्छा, 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 अच्छा. Okay, okay, okay. We got it. Now I understand. But still, यार, काफी कुछ पता है. Immediately you could recall the therapy or the procedure. Good. थेरेपिस्ट? Eye therapist. नो, ऑल थेरेपिस्ट। अच्छा, उसमें तो सब कुछ ही है. हमें योगा थेरेपिस्ट नाउ, यू जो। Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So this Gibbs free energy actually is not Gibbs free energy. It's called as Gibbs function now, or Gibbs energy. The it's very misleading when they talk about the Gibbs. So it's a Gibbs function, though it is popularly known as Gibbs free सो एनर्जी energy. ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट थिंग्स इन No, केमिस्ट्री। no, 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 no. The word is misleading. So they have removed this word from Gibbs concept. It is not a free energy. It is Gibbs function actually. Okay. All right. All right. So let me just write few sentences which we can discuss then. So far, what is our learning? That the total entropy change. Okay, I'll just put it on. So the total here your yeah, total entropy change. What does it predict? If you know total of the system, okay, of the system. Just give me 1 second. I think this will make my life pretty easy. यस, आज कॉफी गिर गई मेरे यार उसके ऊपर, कीबोर्ड पे। अरे कोल्ड क्या कॉफी। क्या कांड करते रहते हो आप? कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है यार। एनीवे, वैसे तो आई एम वेरी ऑर्डरली. माय एंट्रोपी ऑफ द रूम इज nowadays quite bad. I have to get rid of some 1,000 books which I have. Anyway, तो cluttered है मेरा कमरा बुरी तरह से किताबों से. System. So total entropy change of the system can predict the spontaneity. Okay, the rules we studied
If delta S is positive, it has to be spontaneous. Yes. So spontaneity of the system. So total entropy का काम क्या है? Total entropy change of the system can predict the spontaneity. ठीक है? But the calculations, okay, of delta S total would require consideration of both the system and surroundings. Okay. Read this very carefully. So while the entropy change can only go to the extent of system only and escape from system point of view, but if you want to find it delta S total, it requires consideration of both system and surrounding. तो अभी जो हमने वर्ड यूज करा ऊपर सिस्टम था कि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम tells us the spontaneity, but reality is that the delta S should be calculated for total, which is the universe. Okay. The spontaneity of a process, okay, will thus depend both on system and surrounding. तो मतलब एक ही चीज system की spontaneity is not enough. So there are two factors which you already know. Okay, so the spontaneity of the process will thus depend both, क्योंकि अब surrounding system दोनों आ गए, depend both on enthalpy and as well as Entropy. entropy change. There are two factors that come into picture play now. And this is what Gibbs actually studied. So the new function which we introduced, which actually helps us give this perspective about both system and surrounding, which means enthalpy and entropy, gets introduced. So a new thermodynamic function, new thermodynamic function called Gibbs energy or Gibbs function was defined. So it's a new thermodynamic function. Okay. So if you notice that they have not used the word free energy in this, it's Gibbs energy or Gibbs function. There is no word like Gibbs free energy. Okay. Now this was done by J. Villiard, Mr. Gibbs. Okay. Jolia Willard Gibbs. Again, French? Because I think the way नहीं, you pronounced his name appears to be इसे French. जोसिया विलार्ड गिब्स. Okay. Okay. The Gibbs energy, अमेरिका का है, नॉट फ्रेंच. American, okay, maybe. Energy of a system at any moment in time is defined as the enthalpy of the system minus the product of the temperature times the entropy of the system. This is what is the Gibbs function all about. Okay, so it takes care of both the entropy and enthalpy, and the way it links them is G is equal to H minus Ts. Important point, Gibbs function
is a state function. Gibbs function is a state function, but it is defined in terms of three things. The H, which is the enthalpy, T, which is the temperature, Okay. and third, of course, is the entropy. So, अभी तक restricted thinking थी कि uh, change in entropy will decide whether the function is spontaneous or not. So there was a limited approach towards spontaneity. Okay, now the approach towards spontaneity is in broadening, and now there are more factors over and above entropy which are being considered for deciding the spontaneity. And the way you bring these together, which is enthalpy and entropy, हमने पढ़ा भी था एक्सोथर्मिक होगा तो वो फॉरवर्ड होगा और ये बैकवर्ड होगा तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट फॉर्मली गिब्स ने उसको एक शेप दी है that derivation is not to be done, etc. So Gibbs energy is a state function, and the way you have to solve this is so the Gibbs energy is this, but we find out the spontaneity, always focus on delta G, and delta G will be G final minus G initial. And if the temperature is, so if you can substitute the values here, okay, so delta G is equal to delta H system, delta H system minus T delta S system and initial. Okay, so delta H में तो you included both change delta H लगा दिया, and when we do TS का change, so we applied derivative का product rule. एक बार T बदलते हैं, एक बार S बदलते हैं, तो second time what you're doing is you're writing it as delta T multiplied by S of system. If you have Z is equal to X into Y and you calculate dz, then dz is equal to dx multiplied by y plus dy multiplied by x. एक बार ये चेंज करना है, एक सेम रखना है, एक बार y चेंज करना है और x को सेम रखना है, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे. डेल्टा h इज द एंथैल्पी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल. गिब्स जो ये वाला पार्ट है, टी एस वाला पार्ट, राइट, इसके दो हिस्से हैं. एक है चेंज इन टेम्परेचर और एक है चेंज इन एंट्रोपी. सो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और so the overall, if there is no change in the temperature, which means delta T is equal to 0 in a process, okay, so what will happen is delta G system will become equal to delta H system minus T delta S, which is the final expression. That's your final expression. The Gibbs energy of the system. Okay, so T remains same. This means the process is happening at a temperature and initial or final conditions remain same. So whatever is happening by way of the process, spontaneous process, ये reaction होगा कि नहीं होगा, बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा, two factors in play. So the final conclusion आइसोलेटेड is सिस्टम में कि क्लोज सिस्टम में? isolated system में you can't exchange energy, right? So एनर्जी में ये enthalpy delta क्लोज H में हो हो नहीं रहा है ना? पाएगा. हाँ देखो, डेल्टा H तो पॉसिबल ही नहीं है फिर होना. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करना हमेशा. ठीक है, फिर ये क्लोज में हो रहा है. हाँ, so be that you're now dealing with thermochemistry, you're not dealing with physics. गैसियस चेंबर नहीं है, केमिकल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होगा सारा. ओके, एंड सो एंड यू हैव अ लिबर्टी ऑफ मेनी थिंग्स. डेल्टा एस होने की बहुत तगड़ी लिबर्टी है. So delta H and T delta S both are in units are delta H and T delta S both are in joules. ठीक. So this is when we say there is no change in temperature, we mean the phenomena is happening at a temperature. ठीक. Okay. So at a given temperature,
at इसकी कोई यूनिट होती है डेल्टा जी की? हाँ जूल्स ही जूल्स होगी में, ना इन दोनों। जूल्स की होती है, हाँ हाँ। जूल माइनस जूल। ठीक सो है। एट अ गिवन जूल टेम्परेचर, पर केल्विन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी तो आ रहा है। वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। दिस इज जूल, दिस इज इन जूल्स, दिस इज जूल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय केल्विन। अच्छा। At a given temperature, the change in Gibbs energy of the system that occurs during a reaction is therefore equal to the change in the enthalpy of the system minus, the formula is being expressed now, minus the product of the temperature, or it starts with at a given temperature. Temperature times the change in entropy of the system. So delta G is equal to delta H minus T delta. इसकी exact जो explanation है या इसको articulate करना है अगर, so if somebody says what is the Gibbs energy of a system that occurs during a reaction, so sorry, the change, what is the change in Gibbs energy? So the at a given temperature, at a given temperature, ये तो at a given temperature, the change in Gibbs energy of the system that occurs during a reaction, so chemical reaction is a context, is therefore equal to the change in the enthalpy of the system minus the product of the temperature and the change in entropy of the system. If somebody says define the Gibbs function, so at a given temperature, the change in Gibbs energy of the system that occurs during a reaction is therefore equal to the change in the enthalpy of the system. This is the change in enthalpy of the system. The reaction is happening at a given temperature. So you can see the Gibbs energy is being determined by change in both entropy and enthalpy. दोनों की वजह से आ रहा है. Okay, it's a very suitable parameter. It's a very suitable parameter to decide the spontaneity. So just one more comment. It's the most, it's the best parameter. Suitable. It's the suitable parameter for to predict. Okay, to predict the spontaneity of a process. Spontaneity of a process. तो आपको सिर्फ एंट्रोपी से कैलकुलेशन नहीं करनी है to decide whether or not there are two opposing forces sometimes. Whosoever wins finally that decides. And if you remember हमने एक वो पढ़ा था, एक चार्ट बनाया था हमने. हाँ जी। Okay, so let's say let's discuss that chart. I will go to the next page because I think we'll need clean space there. So let's say if you have delta G, now we have established that delta G is that function which will decide whether the reaction is spontaneous or not. Okay, the process is spontaneous or not. So delta G is equal to T. So let's consider various situations. Okay, first, so delta H is negative. Delta H is negative and delta S is positive. Positive. So what will happen? The process will be spontaneous or non-spontaneous. Delta H is negative, but जी। delta S is positive. So the process will be?
Spontaneous. Spontaneous. That is correct. Very important to note this. चार्ट भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो. Second, delta H is positive and delta S is negative. Non-spontaneous. Third, delta H is greater than 0. Delta S is also greater than 0. If the temperature is very high, then delta G, this is at very high temperatures. Okay, so a very high temperature, because it's very difficult otherwise to decide कि temperature क्या था, or greater than 0 at low temperature. Okay, so temperature will be the pivot जिससे पता चलेगा. So this is spontaneous. Spontaneous. I'll just reduce the ink at high temperatures. And delta G is greater than 0 at low temperatures. Non-spontaneous. At low temperature. And delta H is less than 0. Delta S is less than 0. Delta G is less than 0. So you have to be very careful that ये जो लास्ट वाले हैं ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ये दोनों ट्रिकी हैं थोड़े से. इसमें हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर भी एक फैक्टर आ गया. डेल्टा जी इज लेस देन 0 एट लो टेम्परेचर, but the difference is enthalpy is negative now. So this is spontaneous at, ये क्वेश्चन पक्का है गिब्स पे, तो ये चार्ट याद होना चाहिए गिब्स का, उसके बिना you can't solve this. So delta S is still less than 0, but now you have delta G is greater than 0 at high temperature, and this is non-spontaneous at high temperature. Very, very important to understand this. Very, very important. Before I go there, okay, we will revisit this chart at high temperature, क्योंकि numerical करने से समझ में आएगा, क्योंकि negative, essentially हमें delta G we want to be negative, less than 0. Okay, so let's see. ये देखो, ये delta G is less than 0. Less than 0, and process is spontaneous. Either I should have written delta G is less than 0. Before I do that, let me ask you, sorry, this should be greater than 0 for non-spontaneous. True or false? So what you're doing is you have a situation, a system is available to you. So if you have a system which is in thermal equilibrium, so first part, okay? So you have a system, a chemical reaction happening, and this system has a surrounding. Okay, so system is there, and you have a system, and you have a surrounding, and these are in thermal equilibrium, by the way. The question that comes in your mind is, if this system is in thermal equilibrium with the surrounding, so the system is in thermal equilibrium, okay? And you are asked to write an equation of delta S total. What is delta S total? Total means the surrounding and system put together. How will you articulate the change in entropy? So universe की entropy लगातार बढ़ती रहती है. Okay, universe always is increasing its entropy. How will you articulate if thermal equilibrium है, मतलब enthalpy का कोई लेना देना नहीं है. The overall enthalpy, whatever is
So when you say thermal equilibrium, how will you write it? So Delta S enthalpy is total is taken equals care of. to 0. No, no. So it is equal to delta S system universe के लिए plus delta S surrounding. Total entropy of the system goes up when total entropy of the universe is always going up for whenever the spontaneous process is happening. लेकिन enthalpy के केस में the heat which is getting exchanged, which is being lost by the system, is being comes back from the surrounding or vice versa. तो डेल्टा एच का थर्मल इक्विलिब्रियम तो हो ही गया. तो डेल्टा एच तो whatever you're gaining, you're losing that. But so whatever enthalpy the system loses, so enthalpy lost by a system in thermal equilibrium, the enthalpy lost by the system, which is nothing but a chemical reaction, is equal to enthalpy gained by the surrounding. Such a situation where the system and surrounding are in this state is known as thermal equilibrium, where enthalpy gain, enthalpy lost are same. That is one. Okay. So second is delta S total, which is more to do with entropy change of the universe. Now, surrounding and system coming together, delta H has been taken care of here. So they are in equilibrium. But if you notice, delta S total is given by the change in entropy of the system and change in entropy of the surrounding. Okay. Okay. Can I say that delta S of surrounding, okay, is actually equal to Q surrounding divided by T? ठीक है. So Q surrounding क्या है? Q surrounding is the heat transferred to surrounding. Okay. So the surrounding gets the heat, and the surrounding, the associated entropy change of the surrounding is therefore this. The heat transferred to the surrounding is del Q surrounding divided by T, and you get delta S, which is the entropy change of the uh, surrounding itself. So ये जनरल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं Q by T का एंट्रोपी चेंज का. Okay. Now, since the system is in thermal equilibrium from enthalpy standpoint, I'm just giving this a mathematical shape. I'm saying the Q surrounding, okay, the Q surrounding at thermal equilibrium is equal to minus of Q system. Whatever is gained is lost. System lost, you gained. Okay, so note down each of the step may get utilized in when you're trying to solve some numerical. So this is one which may get utilized because confusion in the mind will be क्वेश्चन करने आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला. सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो वर्ड कंफ्यूजिंग होंगे probably they are going to be the surrounding and system. So how do you relate both of them? That may be an important consideration when you solve it. So entropy change of surrounding we have calculated. Can we also say that since this is true, therefore Q surrounding, if I divide both the sides by T, is equal to minus Q system divided by T. So I'm dividing both the sides by T. Okay, divide कर दिया. So what does this tell you about the total which we had written? हमने एक total भी कहीं लिखी थी ये वाली इक्वेशन, एक और इक्वेशन जो B है. ओके एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है वो ये है. The system is in a system and surrounding are in thermal equilibrium is this. Enthalpy gained is equal to enthalpy lost. And then and we use that equilibrium condition to convert it into entropy changes. So one is the negative of the other, entropy wise also. But then what is the total entropy change if we have to write delta S total? So you know it is given by delta S system plus delta S
सराउंडिंग। ओके, सो डेल्टा एस सिस्टम को मैं वहीं छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, बट डेल्टा एस सराउंडिंग इज दिस मच. This is my delta S surrounding, and it is actually the minus of enthalpy. Okay, so let's rewrite this. Uh, and I will change this language also. I think instead of using Q surrounding, I will rewrite this and say, okay, so this is delta H surrounding divided by T is equal to minus delta H system by T. Okay. सो ये हमारा दोनों का जो एंट्रोपी है दैट इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वो भी नजर आ रहा है. और एक हमें मालूम है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की दैट इज अ टोटल चेंज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द फॉर्म इन द दिस. सो ये लिख रहा हूं मैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम, सराउंडिंग को मैं चेंज कर रहा हूँ, सिस्टम में लेके आ रहा हूँ. डेल्टा एस सराउंडिंग आई एम रिट्राइटिंग इट एज डेल्टा, ये वाली इक्वालिटी को यूज करके प्लस को मैंने माइनस कर दिया, डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी. ओके, नाउ इफ आई रीराइट दिस, दिस विल बिकम डेल्टा एस टोटल, and if I multiply this, this will become T times delta S total is equal to T times delta S system minus delta H system. So what is this term? This is the Gibbs function. यही तो है गिब्स फंक्शन. अगर ध्यान से देखो, इफ यू जस्ट रीअरेंज, दिस इज द ओवरऑल, राइट? टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, दिस इज what exactly. Only thing is the negative sign is different, right? Gibbs function की जो definition है उसमें minus delta g is given by delta h minus t delta, इसी उसमें उल्टा आ रहा है, and that is why negative and positive. So delta g is less than 0 means spontaneous. If I reorganize this with a negative sign multiplied both the sides with -1, I will actually get delta g is equal to delta g minus t delta s system. So this is a negative number system. And if t delta s minus this t delta s minus delta h system is greater than 0, which means h system minus t delta s system is greater than 0. So hold on. So wait, let me not write it. अभी delta Just g a को मैं एक step दूर है मेरे ख्याल से. I think we have to prove just a that the minute. system is spontaneous, right? एक Just a minute. क्या हो गया बस भाई एक साहब? मिनट. हाँ ठीक है, which is fine. No worries. Take your time. Yes, sir. I'm back. So I'll just stop here एक second. So T delta S आ गया ना ये? हाँ जी. यहाँ तक तो क्लियर है ना? सराउंडिंग को बस सिस्टम में कन्वर्ट करा और कुछ नहीं करा. ठीक टोटल है. एंट्रोपी लिया यूनिवर्स की. T delta S. अच्छा, अब मैं -1 से अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. वेट. On the contrary, what I will say is, wait, and this is where I think they may ask you to derive the expression of prove that delta G less than 0 corresponds to spontaneous. So we know that T delta S system entropy should be positive, right? For a system, this quantity, the overall entropy multiplied by T should be positive. So this should be positive. This what is it showing? Because delta S total should be greater than 0. एक spontaneous process के लिए ये तो हम establish कर ही चुके हैं. Yes. For a spontaneous process, we've already established that delta S of the process has to be greater than 0. This we've already established. ये हमें पता है पहले से ही. अब तुम सिर्फ enthalpy के साथ एक और
So delta S has to be greater than zero for, universe, for a system to be spontaneous. This is a suitable condition for, spontaneity. ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि जब टोटल एंट्रोपी ऑफ, तो दिस प्रोडक्ट व्हिच इज T into delta S total should also be greater than zero. So I can say this is greater than zero. This Okay. thing is greater than zero. So this right hand side should also be greater than zero. So what I do now is I take a negative sign now and I say delta H system minus T delta S surface is greater than zero. Okay. So minus sign को मैं उधर ले जा रहा हूँ. So I'm taking it on the other side. So delta H system minus T delta S surface is less than zero. So this shows, right, that the delta G, okay, so delta G should be less than zero because we've already defined what is delta G. This is delta G, right? और ये हमने spontaneous इसको establish कर दिया ये लिख के कि ये spontaneous है, और उसी की हमने शक्ल spontaneous की नेगेटिव साइन लेके इस तरफ चले गए तो साइन इनवर्स कर लिया, और वही डेल्टा जी इज लेस देन जीरो. सो फॉर डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनिटी. इसी से आ गया ये. माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई करा तो साइन रिवर्स कर लिया, एंड इसको लिख लिया लेस देन जीरो, और इसको बोला ये तो भाई हमारा गिब्स एनर्जी फंक्शन है. So Gibbs energy function less than zero means the process is spontaneous. Yeah, more than zero for not spontaneous. Yes, that is correct. ये हमने जो अब चार्ट बनाया ऊपर, let's reflect on that chart now. Okay, let's say can we uh, can we understand that chart now? Okay. More importantly, this chart has to be well understood. See this chart very carefully because this is important. Actually, cut off तो ये है ना कि the fight is between delta H and T delta S. नेगेटिव होने में भाई, व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट वेयर इट हैपेंस, कहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा भाई. वी नीड दिस कंडीशन टू बी ट्रू. इफ टी इज वेरी हाई, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ये नेगेटिव नंबर बहुत हाई नहीं हो जाएगा, हाँ जी. तो नेगेटिव होके रहेगा फिर ये. सो रीड दिस इक्वेशन, ये स्टेटमेंट पढ़ो. व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये पक्का है कि डेल्टा एच पॉजिटिव नंबर है, तो इसे ओके, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा एच, ये मेरा पॉजिटिव है ऑलरेडी, ठीक है. ये मेरा पॉजिटिव है, पक्का हो गया. पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं. अगर टी बहुत छोटा हुआ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन दो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, टी डेल्टा एस में स्टिल रिमेन अ वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, एंड द सब्ट्रैक्शन में गिव यू ग्रेटर देन जीरो सिचुएशन. मान लो डेल्टा एच सिस्टम इज 20 एंड टी डेल्टा एस एट वेरी लो टेम्परेचर्स, एट अ लो टेम्परेचर गिव्स यू 10 ओनली बिकॉज टेम्परेचर इज 1. तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, टी से डिसाइड हो रहा है. बट वही टी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और टी 200 हो जाए, तो दिस नंबर विल बिकम हाउ मच, ये 10 जो है, दिस विल बिकम वेरी लार्ज. सो 20 माइनस वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर विल बी लेस देन जीरो. ओके, ठीक है. ठीक है, समझ आ गया. So they can ask you, from here, this explanation, there is a system in equilibrium. There is a system in equilibrium with surrounding. With this condition, derive the condition of Gibbs energy being less than zero. So you have to write the complete explanation that, it is a state function, uh, and this is a diagram of system in equilibrium with thermal equilibrium.
Since it is in thermal equilibrium, therefore the enthalpy lost by the system is equal to enthalpy gained by the surrounding. And with that knowledge, this is one in a thermal equilibrium. Second is the entropy change of the universe is given by system plus surrounding. इसमें कोई exchange नाम की चीज नहीं है entropy के अंदर, okay? So delta S system plus delta S surrounding, and then you write. I'm sorry, you wanted to say something? No, no. ओके फेयर इनफ. सो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला ये हो गया एंथैल्पी की टर्म्स में, डेल्टा सराउंडिंग का भी एंथैल्पी की टर्म्स में आ गया, और यही फॉर्मूला हमने फिर डेल्टा एच में कन्वर्ट कर लिया क्यू, क्योंकि हम क्यू तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है क्यू वर्ड, बट केमिकल रिएक्शन में द सेम क्यू इज नोन पॉपुलरली बाय डेल्टा एच. सो वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू इन एंट्रोपी, द टोटल एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में हमने सराउंडिंग की जगह पूरा सिस्टम वाला लैंग्वेज यूज करा है. तो यहाँ पे आके आते आते सिस्टम बन गया लैंग्वेज. टोटल एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन करी है, उसको फिर हमने टी इधर ले गए, फिर हमने बोला कि हमें मालूम है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो विल मीन दैट, उसी से हमने एस्टेब्लिश कर लिया डेल्टा जी लेस देन जीरो. सो दे कैन आस्क यू फॉर अ सिस्टम इन equilibrium with the surrounding, prove that the condition for the system to be to be a spontaneous process, the condition is delta G zero, and then discuss all the possibilities when the process is spontaneous. Now, वो लिख देंगे and discuss all the cases. So you will have to write all these cases and explain कि अगर ये वाला situation है, आप शुरू ही नेगेटिव नंबर से कर रहे हो, your delta H is anyway negative. So if you start with a negative number here, you know, your delta H is negative here. So you're starting with a negative number and then you're subtracting another negative number. तो वो तो कभी भी डेल्टा जी जो है पॉजिटिव बन नहीं पाएगा. तो दिस इज अ स्ट्रेट अवे केस ऑफ डेल्टा जी बीइंग at low temperatures. But if you have high temperature, which is, this is very high temperature now. This is a very high temperature. If you do a subtraction of delta H is negative and delta S is also negative, by the way, okay? Delta S is also, though, so two consideration. Take a assumptive value of both being positive, and the fourth case is when both enthalpy and the delta S are negative. उसमें फिर फर्दर दो केसेस बनते हैं. तो आपको ये चारों केसेस रादर 1 2 3 4 5 6 केसेस डिस्कस करने आने चाहिए, कीपिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एज पॉजिटिव एंड देन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एज नेगेटिव. ये सारे लिखने आने चाहिए, एंड दिस डेरिवेशन that you explain the complete context of surrounding and system to be able to articulate it correctly. Any doubts in your mind? Baki to obviously we will do numerical practice, we will refer to this chart, but internally also we can, once we have clarity on okay, low temperature है तो कैलकुलेशन में तो आ ही जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, अपने आप ही आ जाएगा. वी डोंट हैव टू डू इट, आ ही जाएगा कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा जी. Any doubts in your mind which Mr. Shitesh? मिस रीटा बताइए जल्दी. यस सर, कोई और भी टॉपिक है क्या हाँ गिब्सोनिटी है का? है अभी डिस्कशन जारी है, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना. ठीक है, तो अभी लेट्स तो डू हम न्यूमेरिकल. थ्योरी करेंगे फिलहाल आज. हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, ये ठीक कुछ है. टॉपिक हैं ऐसे, मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप के, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो इतने चार्ट को सिर्फ ऊपर ऊपर से करना ठीक नहीं रहेगा, दैट विल लैंड अस इन ट्रबल. सो वी विल हैव टू गो स्लाइटली डीप इनसाइड द चार्ट. ठीक ओके. है. So just remember that, if you have a situation where delta H, I'm on the next page now, page number 3. हाँ जी, हाँ जी, Okay. मैं भी आ गया. So delta H is essentially the enthalpy change of the system. Okay. So delta H is the enthalpy change for the system. So एक आपको पता होना चाहिए कि जितने भी processes होते हैं, okay, so enthalpy change is not available for, cannot be 100% converted into work done. This is not possible that you are able to supply Q heat to a system and then you say
इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं होता। सो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। And some of the so generally what happens in a real process. So he's talking about a very real process. Artificially तो हम कह देते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो जितनी भी क्यू थी वो कन्वर्ट हो गई वर्क डन के अंदर। तो जी इंटरन आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्यू सप्लाई करी, वर्क डन मिल गया। वो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल रियलिटी इज दैट व्हेन यू डू अ रियल प्रोसेस, यू सप्लाई हीट टू अ engine or anything, or a chemical reaction happens, some work is done, and some amount of energy is also lost, some amount of energy is lost to surrounding, लीकेज हो जाती है। कोई ऐसा कोई एडियाबैटिक जैकेट वगैरह हम लगा देते हैं पिस्टन के ऊपर कि जी इंसुलेटेड है, कुछ बाहर नहीं जाएगा, फलाना ढिकाना, राइट? सो दैट इज नॉट करेक्ट प्रिजम्पशन। सो ये जो सिस्टम है गैस वाला है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्क डन, क्योंकि पी डेल्टा वी केमिकल रिएक्शन में तो अपने आप होता नहीं है कुछ ऐसा पी डेल्टा वी, ये तो सिलेंडर के अंदर गैस जो एक्सपैंड और कंप्रेस होती है वहां पढ़ रहे हैं। बट वी आर अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल्स हियर ऑल्सो। So, so some heat is lost. So remember, if you have enthalpy change also in a chemical reaction, then that is not available for 100% work. So therefore, we can say that if you have enthalpy change of delta H, then correspondingly delta H minus T delta S, which is your Gibbs energy function के point of view से देखो. So T delta S is that part of the enthalpy, मतलब delta H में से कुछ कट ही रहा है. Okay. So this part of enthalpy is available not for work. It's not available for work. Available for work. Something is getting out of, being subtracted out of. Uh, so the real, uh, like in a thermodynamic gas situation, some delta H gets utilized for work done and some is lost. Similarly, the Gibbs energy gives you a real picture, and it says, okay, if there was nothing called as entropy in the world, then Gibbs energy will be delta H only, because there is nothing called as entropy. But reality is when you have delta H, some part of it gets utilized in the uh, so enthalpy change of the system का जो T delta S वाला part है, it is that part of the reaction which is not available for work. Yeah, so this is not available for work, right? So therefore scientists say that the actual free energy available is delta H minus T delta S. The free word comes from here, but it has been taken off now. So the measure of free energy of a system, which can be easily converted into work done, measure of free energy of a system is not delta H, because delta H में से कभी हमेशा कोई ना कोई लॉस होता है, जैसे कि गैस वाले सिस्टम में लॉस टू सराउंडिंग, उसी तरह से यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो ये वाला लॉस हो रहा है डेल्टा एच का। और रियल डेल्टा एच जो है वो डेल्टा जी है। गिब्स फंक्शन इज द रियल डेल्टा एच एक्चुअली, and we say that it's a real measure of the free energy of a system, not delta H. Delta H कभी भी 100% work done में convert नहीं हो सकता. So if you want to find out the Gibbs energy change of a reaction, then you must find the Gibbs energy or Gibbs function. The tricky way to ask this question is, what is the measure of free energy of a system? A lot of people will say delta H, but you say sorry, because delta H is not idealistic. You cannot convert delta H 100% into work done. It is not the true measure of free energy. If you want to calculate the true measure of free energy, then please subtract T delta S out of that. And then that expression will tell you the enthalpy change for the system. Real enthalpy change of the system is not delta H, it is delta G. And therefore, it is referred to as Gibbs free energy. See. Okay, so there are certain reactions in which, though not in our syllabus exactly, some reactions are there where the Gibbs energy decreases. Okay, so delta G is going to
So Gibbs free energy is going to is decreasing, and these are exi uh, jonic exergonic reactions, but we don't have to worry about them. कौन And सा if जो the exer jonic, and if delta एक्सेप्ट G is increasing in some uh, reactions, then these are known as endogenic reactions. एंडोजर्निक Yes, reactions. Endogenic versus exogenic. बहुत कम पूछते हैं, I think. This is not something they will ask you, really speaking. क्योंकि इसके लिए ना if you go and do a mathematical derivation of delta G, so one question that comes in physics जो पूछा नहीं जाता actually 12th तक भी नहीं पूछा जाता, which is the mathematical derivation of delta G. The तो ये mathematical गिब्स वैसे derivation. फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में है. हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. We don't study chemical reactions, thermochemistry in physics. Therefore, it is not there. नहीं है. बट काफी कुछ जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वर्क डन वगैरह के इंस्पायर्ड बाय फिजिक्स ही हैं. Vice versa is not true. Physics is not inspired by entropy. Physics में we don't study the heat content of a chemical reaction or a substance. We are not worried about those thermodynamic exchanges. We just take an ideal situation of an ideal gas and we compress it or we supply heat to it, and adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric, and that's about it. We don't do anything more than that. But just for your knowledge, what you need to remember for your exam is the derivation. And the fact that real free energy ka, why the Gibbs energy is called so, because a part T delta S is getting subtracted. So the measure of free energy of that system is not delta H, but delta G in reality. इतनी लाइन काफी है इस एग्जाम के लिए, बहुत है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो आपको चीजें पता होनी चाहिए फ्रॉम स्पॉन्टेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, which is what Gibbs energy is actually. You know, it talks more about uh, suitable conditions for spontaneity of a chemical reaction or a process, which is delta G. तो आप बात करो अगर spontaneity की, तो जो डी एस यूनिवर्स है, ओके, सो यूनिवर्स का अगर डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, तो हमने तो ये पहले ही ग्रेटर देन जीरो लिया था डेरिवेशन में, तभी हमारा नेगेटिव साइन आया था. दिस एक्चुअली implies, आई एम जस्ट समराइजिंग what we just studied, okay? So it's a some more of a summary. Delta ds universe, okay, I think I should write it more cleanly. So ds of universe is less than zero, implies that delta g is greater than zero, so the process is non-spontaneous. इसका बिल्कुल उल्टा अभी हमने लिया था डेरिवेशन में कि ds has to be greater than zero for spontaneous process, and if ds universe is greater than zero, this implies delta g is less than zero. So this is spontaneous. And if ds universe third, which is equal to zero, that means dg is equal to zero, right? So this is delta g is greater than zero. So it's a change, like we studied the terms above, right? Endogernonic. So gernoc is this. So this is endogenic. And if delta G decreases, it is called exergonic. But if D universe is equal to zero, which means universe को कुछ हुआ नहीं उससे. Now, and DG entropy में कुछ नहीं. Such reactions are reversible reactions. Reversible reactions. We don't need to go into this detail की reversible reaction DG is equal to zero. But you should know, ये तो हमें पहले से ही पता था. This is no brainer. Only thing is, with the help of ds, entropy being greater than zero, we've established only one thing, which is this: that the Gibbs free energy, the enthalpy पे क्या impact पड़ा है? Actually, ds impacts enthalpy in a way, right? The true measure of free energy available in a system. So enthalpy got reduced a bit and it actually became negative. Delta H minus T delta हो गया.
So delta H तक बात नहीं रही, उसमें से कुछ subtract करा. That is a free measure, the true measure of the free energy of a system. The heat content in reality is that, because part of it gets utilized for entropy change and all that. ठीक है? Rest obviously we Okay. will learn as we progress into numericals. So we will start numericals now. Okay. I'm going to the next page now. So we will start with something very simple, but which gives us a deep insight into. Uh, so let's say you have a situation where you have a nitric oxide. Okay, so you have a nitric oxide gas, the 2NO gas plus O2 gas is 2NO2 gas. Okay, and this is a reaction, and initially this is the condition. Okay, let me just draw it. So this is the condition. So you have two uh, vessels. This is your N2. This is your O2. And there is a stopcock between them. Okay, so they can be joined to each other. इससे अच्छा तो मैं ये बना लूं यार. This one. So they're connected to each other, and there is a stopcock between them, which can be opened or closed. So this is your stopcock. Okay, so this is my. If I open it, they will mix. So this is the initial condition. This is at 4 liters and 0.5 atmosphere at 300 Kelvin. The other gas is, and we know the gases would like to mix up. हमने भी इसके कुछ देखे भी थे रूल्स के 2 liters क्योंकि randomness बढ़ती है and 300 Kelvin. So this is the initial condition, and now what you do, and this is a reaction. If you bring them together, you see the number of moles are getting reduced, by the way. So number of molecules is going down. Should not be happening actually, but let's see. So when the valve is opened, the reaction happens quickly, which means spontaneously. Okay. Now, question is, determine what gases remain at the end of the reaction. Determine what gases. And he's saying that the reaction happens quickly. What gases remain uh, at the end of the reaction of the reaction? And calculate. This you would not be able to do because you don't know ample amount of physics. Calculate the partial pressure. Partial. Okay, so the word is partial pressure. होता है कुछ. And your assumption is the temperature throughout this phenomena remains 300 Kelvin always. It is given that universal gas constant is 0.08 atmosphere per liter per mole per Kelvin, and temperature is also given. So let's discuss this. What do you think the question is all about? ये तो पक्का है कि दोनों रिएक्शन बोल भी दिया कि रिएक्शन is going to happen. So what do you think is happening here? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? Any guesses? Partial pressure, I think you don't know. Do you know that I told you that for isothermal reactions, the change in entropy of a system, ये हमने पिछली बार डिस्कस करा था. Is Obviously, zero. सिर्फ no, hold on. Delta Okay. S system. तो रुको. Okay, is NR ln V2 by V1. अच्छा. So अच्छा. N is the हाँ करा था NR. हमने यार ये. हाँ, NR natural log V2 और upon V1. हाँ मतलब करा था हमने, बट ऑब्वियसली इतनी डिटेल में नहीं करा था कि कहाँ से आ गया ये. हमने एज अ मेमोराइजेशन कर लिया था कि ये बस याद कर लो, दैट्स ऑल. इतना ही करा था हमने तो ये. बट इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ हो रहा है. पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फोकस है सारा का सारा पार्शियल प्रेशर पे है. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. नाउ 2 moles. So first part I am ignoring. Okay, 2 moles of an ideal gas. 2 moles of an ideal gas expand irreversibly.
I will tell you about partial pressure later. You don't need to worry about it here. And isothermally. This is interesting. क्योंकि एंट्रोपी का क्वेश्चन तो ये एक्चुअल 27, तो वही उन्होंने फिजिक्स को भी मिक्स करा हुआ है 27 डिग्री until its volume doubles. Volumes doubled and 3.3 kilojoule heat is absorbed from surrounding. So this is what will create confusion. Surrounding, system, ये word आएंगे ना, clarity नहीं होगी कि हो क्या रहा है, तो फिर confusion हो जाएगा. Determine delta S system and delta S surrounding. So let's read the question again. There are 2 moles of gases available. It expands irreversibly and isothermally at 27-degree unit. Its volume is doubled and 3.3 kilojoules is absorbed from the surrounding. So why system and the surrounding concept, and there is a flow of 3.3. It's not a equilibrium situation. So this is your surrounding and that's your system. 3.3 kilojoules are flowing in it from the surrounding. Determine delta S system and delta S surrounding. Okay. So now you know what type of process is it, right? You can see it's isothermal process. For an isothermal process, this is the expression. That delta S for an isothermal process is NR ln V2 by V1. Now you know moles 2, R you know, ऊपर दिया है R, and V2 you know, double हो गया, तो NR ln 2 is your answer. So you can calculate delta S system. तो फिर delta S system आया ना ये तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना है. हाँ जी. कैसे निकालोगे? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी. हाँ जी. और कितना गया था उसके अंदर एनर्जी? 3.3 किलो जूल गया. यस. लिखा है ना? हाँ जी. सो 3.3 किलो जूल्स is absorbed from surrounding. So 3.3 kilojoule मतलब 10 raised to power 3 at 300 Kelvin. So look at this. System की कितनी आ रही है? NR log 2. If you calculate, this will come out to be 11.52 kilojoules. Log 2 का टेबल हमें देखना पड़ेगा. Log natural log में joule sorry 11.5 joule per Kelvin and delta S surrounding is sorry delta S surrounding in terms of system अगर हम निकालेंगे हमारे पास Q तो absorbed है ना. सराउंडिंग का अगर लिख रहे हैं, अगर मैं ऊपर सराउंडिंग ही लिख दूंगा तो सराउंडिंग ने तो लॉस करा है. लुक एट दिस. And 3.3 is absorbed from surrounding. So delta S surrounding लिखा जाएगा minus of delta Q system. Or you can write it as Q surrounding. It is your choice. Divided by T. Formula ये होता है. Q surrounding by T. So ये आ जाएगा, देखो कितना ये आ रहा है, -11 जूल पर केल्विन. 3300 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 11.52. नेट चेंज अगर मैं दोनों निकालूंगा तो 11.52 -11 टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स. डेल्टा एस ओनली, नॉट डेल्टा जी. अभी डेल्टा जी पे हम पहुंचे ही नहीं है. अभी तो हम डेल्टा एस देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट होता है. ओके सो लेट्स ओके ऑब्वियसली इसमें डेल्टा जी आया नहीं ना कहीं पे. गिब्स फ्री एनर्जी पूछा ही नहीं है. So let's do a JE numerical now, and let's see whether we can attempt it. So carbon monoxide plus half oxygen gives you CO2. Okay, and now we have to show it's a spontaneous reaction. But our focus is going to be a suitable measure, which is Gibbs energy. And it is given that the standard entropy change is minus 0.094 kilojoule per mole per Kelvin.
the standard Gibbs energies of formation of CO2 and CO are respectively. CO2 की जो Gibbs energy है formation की, that is given to be minus 394.4, and that of carbon monoxide is given to be minus 137.2 kilojoule per mole respectively. Okay, now we have to find what? हमें तो वो देखना होता है ना, final minus initial. So delta G of the reaction will be given by delta G product हाँ जी, minus delta G of reactants CO plus half delta G, क्योंकि उसके आगे कोफिशिएंट है, ऑफ O2. ओके, ये वो भी लगाते रहो गोला दिखाने के लिए कि वो H नॉट की तरह लिख रहे हैं हम इसको भी. Let's substitute the values. Delta G minus 394.4 minus 137.2 into half into क्या आएगा? डेल्टा जी सीओ कितना है? सीओ का है 1372, राइट? हाँ जी, ये रहा ना सीओ 137. यस सर, 137 सीओ का दिया हुआ है, और 137.2 इंटू हाफ इंटू क्या करूं बताओ? टी डेल्टा एस लिखना होता है, रिमेंबर दैट. टी डेल्टा एस. टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? कुछ भी नहीं. हम्म, सो दिस इज, मैंने फिर इनको एक्सपेंड कर लिया अंदर, इस वाले को ना, डेल्टा जी, और इसको आई हैव रिटन एज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो इनकी जो वो सब्ट्रैक्शन हुई, तो वो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया ना, टी तो था ही नहीं. हमने जब डेरिवेशन करी थी पिछले पेज पे, तो दो लिखे थे, एस डेल्टा टी और टी डेल्टा एस. ठीक है, डू यू रिमेम्बर? यहाँ या पे है, मैंने बोला था डेरिवेटिव होता है, कहीं लिखा था यार, एक मिनट, याद नहीं आ रहा, एक मिनट. ये रहा, जब डेल्टा को निकालने के लिए, हाँ ये रियल फॉर्मूला है, ये वाला. डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला माइनस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा टी, अगर इक्विलिब, क्योंकि डेल्टा टी इज जीरो एट टेम्परेचर, सो द फॉर्मूला इज रिड्यूस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ओनली. ओके, So this is, आई थिंक हमने थोड़ा थोड़ा शुरू में ही थोड़ा वी पिक्ड अप अ स्लाइटली टफ टाइप ऑफ, टफ तो नहीं है खैर, फॉर्मूला फिटिंग ही है. सो 394.4 माइनस 137 हाफ इज इक्वल टू माइनस 394.4 प्लस, कितना आएगा? ये तो जीरो ही हो गया ना, ये तो पूरा प्लस हम्म, जीरो इज इक्वल टू, नहीं जीरो कैसे हो गया ये? ऑक्सीजन डेल्टा जी, ऑक्सीजन की कहाँ दी हुई है वैल्यू? एक ये दी है, एक ये दी है, और सॉरी, व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग दिस विद जीरो यार? किस बेस पे? कार्बन मोनोऑक्साइड की तो हाफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ये कहाँ वैल्यू दी हुई है? ये रही 137. अच्छा, 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 ये फॉर्मेशन वाली साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी, विच मीन्स इट इंक्लूड्स द ऑक्सीजन ऑल्सो. ये टोटल फॉर्मेशन ये है 137.2 इंटू हाफ. कोफिशिएंट सही नहीं लग रहा है यार. और अच्छा, ये दिया फॉर्मेशन ऑफ, लेट्स वेट फॉर दिस यार, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, वेट.
डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस ये करना है, इतना सा करना होता है बस। डेल्टा जी, एक सेकेंड यार, डेल्टा जी इज गिवन बाय डेल्टा जी, सारे ऐड करो, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा, और सॉरी यहाँ पे जो वर्ड लिखना है वो लिखना है फॉर्मेशन, ये हेसिस लॉ टाइप ही लगाया, एंड डेल्टा एफ जी रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लगाना होता है, दैट्स ऑल। ये ठीक है। लगाया नहीं हमने, ठीक है यार, क्यों, क्या हो गया इसके अंदर। लेट्स ट्राई वन मोर एंड देन लेट्स कम टू दिस। कभी ठीक से लगा नहीं पाया मैं, कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड ऑक्सीजन की वैल्यू। सीओ दिया हुआ है मुझे, तो मैंने कर दिया -3.1, बट ये इनटू हाफ थोड़ी ना करूंगा, इसमें कोफिशिएंट तो 1 ही है। ऑक्सीजन के लिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो समथिंग समथिंग रॉन्ग, बट एनीवे, होपफुली we should be able to solve another one. So C2H4 plus HNO3 gives CH3COOH plus H2O plus NO plus NO2. Okay, so you have to find whether the reaction is spontaneous or not. So delta G of, वही फेसिस लॉ लगा रहे हैं ना, फॉर्मेशन मालूम है सबकी, सबकी फॉर्मेशन दे रखी है, तो डेल्टा जी फॉर्मेशन for C2 CH3 COOH is given to be -392.5, ठीक है, and H2O is a liquid, अच्छा। okay, and डेल्टा फॉर्मेशन, हेसिस लॉ तो समझ में आता है ना, हाँ जी। तो फॉर्मेशन की मदद से डेल्टा जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी इंडिविजुअल वो दे रखी है फॉर्मेशन की डेल्टा जी, तो वी कैन यूज द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डेल्टा एफ टू कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो ये लिक्विड हो गया, और तो प्रोडक्ट 3 हो गए ना, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लिए, और NO की जो है, अच्छा नहीं, देयर इज अ टेबल वी हैव टू रेफर टू, टेबल हैज टू बी रेफर्ड वेयर द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज का एक टेबल था ना, जिसमें वाटर की इंथैल्पी दे रखी थी, फिक्स्ड टेबल होता है जो, हाँ। the table is available which needs to be referred to see the standard enthalpies of formation of each of the molecule, वो एक टेबल है, उस टेबल से ही पता चलेगा कि क्या इंडिविजुअल है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो दी नहीं होती और टेबल दिया होता है वो अलग से, तो टेबल को रेफर करना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस में वो हर एक की इंडिविजुअली लिख देते हैं। टेबल है ये, there is a table for standard enthalpies. We will have to see the table of standard enthalpies. I hope we get it यार, कहाँ है टेबल, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी, टेबल 7, just do a Google search table of standard enthalpies, कुछ तो होना चाहिए यार हमारे पास, बिना टेबल के हमें ये थोड़ा याद थोड़ा ना रख सकते हैं वैल्यूज। वो वो ढूंढ के पेस्ट कर दो अगर मिल जाता है तो सारा, टेबल नंबर, कोई टेबल है जो, तो हमें पता होना चाहिए ना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए टेबल चाहिए होता है, सबकी वैल्यू चाहिए। फॉर्मेशन ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, डेल्टा जी, बट डेल्टा जी रिमेम्बर, डेल्टा जी जब वो फॉर्म होते हैं तो डेल्टा जी का क्या चेंज होता है, नॉट डेल्टा एच। दिस इज वियर्ड मैन, so we should know some table for this.
स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। मिल गया कुछ दिस तो। इज शेयर कुछ है। करूं? हाँ शेयर दिखाना जरा करूं? टेलीग्राम पे। नहीं, एक बार मैंने स्क्रीन शेयर पे, आप बता दो कि कुछ मतलब एक्सेस वो देने के। टेबल, एक सेकंड ये वेट। बार देख लो ये सही है कि नहीं है, आप एक बार बता दो। ओके, नो नो वी कांट शो इट यार ऑन यूट्यूब बिकॉज दे हम्म, विल स्ट्राइक इट एज कॉपी, कांट कॉपी। तो आप वैसे व्हाइट बोर्ड पे भी तो कॉपी करोगे। नहीं 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 करूंगा ना, मेरे पास जो है वो इट्स एक बार फ्री। देख लो, सिर्फ एक सेकंड के लिए, नहीं होता अलाउड वैसे नहीं ये। होता यार, अलाउड नहीं होता। कांट सी, एक न- सेकंड के लिए भी गलत काम नहीं कर सकते आप। अरे सर, नहीं बताओ तो। होता, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती, कोई होता है वीडियो होता है डिलीट होता नहीं है। होती, एक बार आप कर लो एक बार। नहीं, अच्छा, नॉट पॉसिबल। फिर मैं आपको लिंक ही भेज देता हूँ। हाँ मैं देख लेता हूँ ना खोल के, पंगे क्यों ले यार। नो कॉपिंग। बोल दो जी मेरा टेबल है, वैसे तो ये टेबल इज बी रिलीज बाय साइंटिस्ट, इट इज नो वंस प्रॉपर्टी राइट। ओके, लेट मी सी इफ इट हैज स्टैंडर्ड वैल्यूज। बट ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, दो नंबर चार वो कोफिशिएंट के हिसाब से वो नंबर लिखने हैं। और इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज हाँ दी हुई है फॉर्मेशन। डेल्टा एफ भी दी हुई है, हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है। ये बढ़िया। ओए ओए ओए, ओ बेटे, क्या होगा? कितना बड़ा टेबल है ये। सारे कंपाउंड्स हैं ना इसके अंदर। CH3COH नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करो। हाँ सी में देखा है मैंने यार, सी में गायब है। अच्छा, इसके अंदर ऑर्गेनिक नहीं है, सारे इनऑर्गेनिक वाले हैं। हाँ वही लग रहा है मुझे। रुक जा, मैं ठीक ऑर्गेनिक है, कंपाउंड्स का चेक करता हूँ। देखो। मेक सेंस। बट आई एम बिट सरप्राइज कि if they give a question then question should have complete मतलब वो देना चाहिए ना यार, कि ये सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज भी हमें ढूंढे बैठ के। शायद मिल गया मेरे को। इन सबकी इफ यू सी द वैल्यूज। सर ये सारे उनका है, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वही मुझे लग रहा था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही है। ठीक है, ये रहा मेथड सर, यही है। भेज दिया मैंने आपको। मेथड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक द मेथड इज that you just need to write the delta G of each one of them in a table. Put the एक मिनट, हमारे पास तो एसिटिक एसिड है ना, हाँ, इथेन इसके अंदर ब्यूटीन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखना एसिटिक एसिड कहाँ पे है। बुटीन है, मिथाइल प्रोपेन, साइक्लो 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 मिथिल इथीन बुटाइन, बुटाइन बेंजीन है। एसिटिक एसिड एसिटिक वो एसिड सर एसिटिक। इथेनॉइक एसिड के नाम पे होगा वो। एक मिनट देखें जरा। इथेनॉइक, नो सर नहीं है। मुबारक नहीं, हो। रुक जाओ रुक जाओ। कंप्लीट इडियट्स मैन, ये तो सीधा सीधा दे देना चाहिए था इनको। इथाइल इथेनोएट। वैल्यू देने में भी तकलीफ है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो यार, मेरे को पता है बस सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ नहीं करना। पिछले ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन की गायब है, इस क्वेश्चन के अंदर सबकी वैल्यूज ही नहीं पता। और इक्वेशन तो पूरी पता है, इसमें करना क्या है। ये ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, डेल्टा जीस को ऐड करना है, प्रोडक्ट वाली साइड को पहले ऐड करना है, फिर माइनस रिएक्टेंट्स वाली साइड। करना क्या था ऐसा, दे ही देते। एक दो तीन चार, चारों की दी हुई है। मैं ओके, मुझे वैल्यू मिल गई, मैं वैल्यू लिख देता हूँ सारी। ना भी चार वैल्यूज ही लिख देते कि ये चार वैल्यूज हैं, तो दैट दैट वाज मोर देन इनफ फॉर अस। इनको किसने बोला था ये लिखने को इतना लंबा। ये हमारे पहले सेकंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, वाटर राइट। हम्म। तो डेल्टा एफ सर एसिटिक जी एम। एनीहाइड्रेट क्या होता है? वो एसिटिक एसिड नहीं यार आई होता? हैव नो आइडिया, नो आइडिया, नो क्लू। वीक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। my you I will check with my son, he's a genius of organic chemistry. Okay so this is -237.2। अच्छा, और NO गैस वैल्यू। ओके सर जस्ट गिव आपका मी वन सन किस सेकंड चीज यार। का डॉक्टर है? जैसे MBBS डॉक्टर होते हैं, अभी सिर्फ MBBS है। अच्छा, और आपके फैमिली में और कौन है?
और कोई है डॉक्टर? कुरियर ओटीपी दे दो जी। एनीवे, तो ठीक है, चारों की वैल्यू दी हुई है, जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यार, और कुछ नहीं है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया फाइनल ठीक है। पूरे रिएक्शन का, तो आंसर इज इट इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज डेल्टा जी ओवरऑल इज नेगेटिव। अच्छा। ठीक है, वेट, लेट मी जस्ट डू टेक आउट द प्रदीप बुक। आई होप हम्म। प्रदीप में वैल्यूज दी होंगी यार क्वेश्चन के अंदर। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, डेल्टा जी। सर की फैमिली में और कौन कौन डॉक्टर है? मेरा ब्रदर डॉक्टर राहुल गेरा, अच्छा। उसका और? वेबसाइट है इसी नाम से। अच्छा। वन ऑफ द बिगेस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है कंट्री का। और आपकी डॉक्टर फैमिली में मनीष जो गेरा, डॉक्टर मनीष गेरा, अच्छा, पूरा आपके। नेफ्रोलॉजिस्ट, अमेरिकन, अच्छा। अमेरिकन सिटीजन। उसकी वाइफ डॉक्टर पूजा गेरा, मेरे ब्रदर की वाइफ डॉक्टर शैलजा गेरा। वो शी इज अ, क्या होता है बेहोश करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कुछ हो तो बोलते हैं। पैरामेडिक्स। अबे बेहोश करने वाले, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया। यस। जब बस बेहोशी करते हैं वो। और जगाते भी हैं ऑपरेशन से पहले, सपोर्ट रोल में होते हैं। और क्या है? नींद नहीं आती तो बेटा तो लगवा मैं लो भी कर उनसे। लूंगा। बेटा 8.5 साल लग जाएंगे करते करते, 8.5 साल लगते हैं। एनेस्थीसिया देने के लिए भी? हाँ, एनेस्थो डिग्री लेने के वो लिए तो मैं मर जाते हैं इंजेक्शन लोग दे के कर टेबल पे। दूंगा। तब बस इंजेक्शन, ये वो इंजेक्शन भी बेहोश। इतने टाइप के हैं। ओके, प्रॉब्लम वन। ओके, so enthalpy change in the reaction is given to be delta H is given by 40.63 kilojoule per mole, and entropy change is given by 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। प्रिडिक्ट द फीसिबिलिटी, अब आया ना क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द फीसिबिलिटी, होगा कि नहीं होगा बताओ। एंड द रिएक्शन इज हैपनिंग एट 300 केल्विन। करो जरा, डेल्टा जी निकालो। ये फिर भी ठीक है और यार। ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, पता है ना। हाँ जी, सो क्योंकि डेल्टा जी है, जीरो से कम है। हाँ, अच्छा कर लिया मन में। हाँ। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ ठीक है। ओ नहीं होगा। पॉजिटिव आ रहा है। नहीं सर, कैसे वो तो करा 40। अच्छा, ये भाई, जूल पर इसको केल्विन है मल्टीप्लाई सर। कर, अरे सर, हाँ वही अच्छा। गलती, वही गलती, वही गलती, वही गलती, दूसरी या मैं बार। सर वो किलो जूल बार बार पढ़ लेता हूँ मैं इसको। बी केयरफुल। सेकेंड पार्ट। अच्छा, एट जीरो, दूसरा पार्ट क्वेश्चन टू है, और इसमें वर्ड लिखा है इक्विलिब्रियम, मतलब डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो, ठीक है। ठीक है, एट 0 डिग्री आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम्म। H2O gives H2O liquid. Obviously, ice is becoming solid. Ice is becoming H2 liquid. What will be delta S and delta G for this conversion of डेल्टा ice जी to तो जीरो liquid? ही होगा So दिया क्लियरली। हुआ है enthalpy change। हाँ, क्वेश्चन ये है what will be delta S and delta G? So ठीक है, first answer is delta G is equal to zero because it is equilibrium। हाँ जी, ठीक है। और डेल्टा ठीक है, एस अब जो होगा। दूसरा निकालना है आपको, डेल्टा एस। हाँ जी। टी माइनस डेल्टा एस। सो टी मालूम है,
डेल्टा जी पता है, टी 0 डिग्री का लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज, ये क्या लिख रहा हूँ मैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से लिखना था मुझे। और टेम्परेचर 0 ही है ना। सही है। हाँ तो 273 में कन्वर्ट करेंगे ना, so this is known 6 माइनस 6000। हाँ 6 किलो है यार भाई, ध्यान से। ओ भाई 6000 है, प्लीज मेक इट 6000। ओके, हम्म, 1000 माइनस 273 हाँ जी। टू, डेल्टा एस निकालना है, निकालना है, इक्वल टू 0। तो डेल्टा एस हो जाएगा 6, 6000 बटे 273 हम्म, जूल पर केल्विन पर मोल। सही है। आ गया। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज इन द नेक्स्ट क्लासेस, अब मेरी आंखें ले नहीं पा रही है, वी विल डू सम मोर प्रैक्टिस एंड स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, रेडॉक्स। इसमें काफी टाइम है, रेडॉक्स तो जल्दी हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। एक दो दिन, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो आई टीच दैट वे यार। और मुझे थ्री बताओ, डेज ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, हो ही गया? क्या क्या रह गया? बस मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बची है और क्या। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो हम करेंगे, उसके बिना तो मैं कंप्लीट छोड़ूंगा ही नहीं इस चैप्टर को वैसे भी, सो यू डोंट हैव टू थ्योरी वरी। पूरी हो सॉरी, चुकी है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, फिर रेडॉक्स रिएक्शन शुरू कर देंगे। कितने दिन में खत्म हो जाएगा रेडॉक्स? आई थिंक यार इट विल टेक अराउंड 8 to 10 आवर्स। मतलब 8 to 10 आवर्स, यानी कि 5 क्लासेस और से यस, ज्यादा। यस 5 फाइव क्लासेस से लग थ्री जाएंगे। 3 क्लासेस। हाँ, नहीं 5 क्लासेस लगा के चलो यार, मैं बड़ा वो आराम आराम से पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री को, तो मुझे जल्दी नहीं है। 5 क्लासेस में हो जाएगा, तो कब तक खत्म हो जाएगा मैं बताता हूँ ना। 8th 9th 10th 11th, मैक्सिमम 12th तक जाएगा ये। 8 9, हाँ मैक्सिमम 12th तक जाएगा, मैक्सिमम। और और अगर एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, फिर इसको यार खत्म करते हैं क्या इस चीज रेडॉक्स जाएगी 12th रिएक्शन। में? हाँ, क्या चीज जाएगी 12th तक? खत्म हो जाएगी ना 12th को, 12th नवंबर। रिडॉक्स रिएक्शन ना। हाँ, हाँ फिर ठीक है, मुझे फिर मैथ थर्मोडाइनमिक्स की शुरू बात। कर देंगे ना, फिर मैथ शुरू कर देंगे। ठीक है ठीक है। परम्यूटेशन है, नहीं नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है, बाइनोमियल हाँ, होगी और एक चैप्टर बायनोमियल और भी होने। सर, मैं तो अगर मत शुरू करना, बायनोमियल में कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है, मैं टेस्ट कर लूंगा बस, दैट्स ऑल। टेस्ट कर लेना, बीच असाइनमेंट बीच में भेज से देना क्वेश्चन उसको। कर लेंगे, नहीं नहीं मैं करवाऊंगा अपने सामने। मुझे कन्विंस कर देना, अच्छा, तुम्हें आती है, तुम बहुत बड़े वो मतलब बोल देते हो फिर नंबर नहीं आते तुम्हारे करस्पॉन्डिंग, आता तो होता है। नहीं नंबर में मैथ में आए हैं। क्या नंबर आए हैं? 45 नंबर। नहीं 45। फिजिक्स में आए हैं बड़े कम, हाँ। हाँ फिजिक्स में बट कम है। कितने, ओ पूरा पेपर आता था जी। नहीं कुछ मैथ्स नहीं में आया। नहीं खाए थे क्या? मैथ्स में ऑलमोस्ट मैथ्स में 70 भी थे। बहुत कम थे, बहुत कम थे। कितने में से थे 80 में से 70। इस टर्म में? हाँ। है, केमिस्ट्री क्या में हो, कितने थे? केमिस्ट्री में सर 55 से हाँ 60 केमिस्ट्री 70 में, में से। केमिस्ट्री में कम थे, 70 में से, केमिस्ट्री में 70 कम में थे। से। हाँ केमिस्ट्री में कम थे, 80% आए हैं। मैथ्स में सही आए हैं, फिर 80 में से, हाँ एक में 70 था, एक में 56। फिजिक्स में सबसे कम आए, विच इज वियर्ड मैन। हाँ स्कोरिंग था फिजिक्स बहुत में। इस बार, बहुत स्कोरिंग था, वर्क पावर एनर्जी उसी में मार खा गए तुम। और न्यूमेरिकल, इतने न्यूमेरिकल दिए गए थे, थोक के भाव। एनीवे इस बार वी विल करेक्ट। रोटेशनल में भी मुझे बड़ा डर लग रहा है तुमसे, एनीवे तुम्हारी असाइनमेंट का आता पता नहीं है अभी भी। आपको मुझसे डर, मुझे तो रोटेशन से डर लग रहा था। यू आर स्केर्ड ऑफ रोटेशनल ना। मुझे सिर्फ उसके अंदर बस एक टॉपिक अंदर रहता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम बस। ले, टॉक और एफ इज इक्वल टू एम में कई 2 3 बार लगाना है, एक जगह चुन के उसके अराउंड एक्सिस वो बना के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के सारे फोर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस कर देना है उस पॉइंट के अराउंड। ठीक ठीक है। है, आई विल रीडू दिस फॉर यू, बट आई होप दिस हेल्प्ड यू फ्यू लाइंस, पहले ही पता थी तुम्हें तो। हाँ हाँ मुझे पता है। प्लीज कंप्लीट माई बस असाइनमेंट थोड़ी भाई। प्रैक्टिस है, ये मैं सिर्फ, उसकी वो मैं कर लूंगा। हाँ फैशन के लिए नहीं भेजा, प्लीज डू इट। आई विल सेंड यू 4 5 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डू देम।
एंड देन डिस्कस. ठीक है? क्या हुआ? ओके. सन्नाटा कैसे आ गया? नहीं नहीं बोलो यस सन्नाटा. सर, आई एम हैप्पी टू सॉल्व 1000 क्वेश्चंस. यस सर. ओके सर. See you tomorrow then.